Hi guys, welcome to my channel, and today I'm going to discuss about motivational books which I have, and some of the books I have already completed, and some of the books I will complete. As I told you that make the books as your best friend, so it will give you a lot, it will teach you a lot, you will learn a lot from these books. So the last two videos I started with the spiritual books, which is extremely necessary in our lives, and the second video I made on the books about on Dr. Dweck, and I hope you like the video. And I also described or explained that why I bought all those books. So I forgot to I have a couple of more books from Dr. Dweck that I will show you when I'll discuss about the leadership skills and on economics, money, economics, finance kind of thing. I'll discuss that time. So what I'm going to show you right now is all these books. Again, I hope you can see all this starting from the power. Okay. So these are all my motivational books, and I just told you that I have completed some of these books. So let me keep it here. So let's discuss about the books one by one. I'll not be able to talk about all those topics. It will be each book will be at least half an hour to 45 minutes if I started describing all those things. So देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। और सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं हमेशा कलेक्शन के बाद जो छोटी छोटी पेज वाली किताबें हैं उसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। एंड दिस वन is the first book I completed, that's by Jeff Keller, and attitude is everything. You don't believe, unless until I have told you, when you start working on yourself, there was a saying from Jim Rohn, that once you start working on yourself you can make a fortune. If you start working for others, like for a company, you can just get the money or salary. But if you can start working on you, you can make a fortune. Okay, so this is all about attitudes. And what they say is attitude is a choice. Okay. It has some formulas, like let me tell you. Yes, it has 12 lessons, and there's a conclusion. So I'll recommend this book to you because this is something when we work at the corporate level, or even if एक दुकान में भी हम काम करते हैं ना, अगर हमारी कोई खुद की कंपनी है, खुद की दुकान है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, तो ये चीज़ काम में आएगा कस्टमर के साथ या फिर अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी. So I will recommend this. The next is very small book, 52 Ways to Lead Success by Gnsa. Saburo. I love this book, and let me tell you very frankly, if you go to my habit tracker video, I made a video on habit tracker and planner and the diary I maintain each and every day. One of the things I learned from this book is the daily 3 or daily 5.
what is that actually? The daily threes focus on only 2 or 3 things and complete it without procrastination kind of thing. टालम टोल के बगैर आप उस चीज़ को खत्म कीजिए. सो हर दिन जब आप सवेरे उठते हैं और सवेरे उठने के बाद उसको रखते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ उस दिन में, सो एटलीस्ट 3 चीज़ आप रखिए. और वो 3 चीज़ या फिर अगर कुछ कर सकते हैं आप 5 चीज़ भी रख सकते हैं. सो द डेली 3 और द डेली 5 kind of thing. And I have started working on this daily 3 or daily 5 at least since at least for 2 years, and I've got the benefit. Because अगर ज़्यादा काम आप अगर रख लेंगे उसको नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते, तो मुश्किल हो जाता है. फिर वो टालम टोल होता रहता है, जिसको एक बड़ा सा वर्ड में कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रोक्रास्टिनेशन. And I'll make a video on procrastination. I'll tell you my story. I was a victim of procrastination and how I completed it. This book will help you. That daily 3 kind of thing. Now, ये दोनों जाने के बाद बड़े बड़े बुक आते हैं. This one, The Secret, by Rhonda Benney. There is a movie on Secret. ठीक है. और इसके बारे में मैं ज़्यादा इतना ही कह सकता हूँ कि एक जो मैंने एक वीडियो में बोला था इनके बारे में, कौन है, हैलेल रोड, जो उन्होंने 6 ways to success लिखा था, SAVERS. सो वी में उन्होंने विजुअलाइज कहा था. यूट्यूब में अगर आपको चांस मिलता है उस सीक्रेट को देखने के लिए, मूवी को देखने के लिए, या फिर छोटे उसमें एक विजुअलाइजेशन का सीन है. आप वो विजुअलाइजेशन सीन को देखिए और विजुअलाइज करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन जो चीज़ है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीक्रेट. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट इज दिस वन, थिंक एंड ग्रो रिच by Napoleon Hills. This is one of the book every person should read, and even if you read this book time and again, this will help you to set your mind how to accumulate money. So it's not only a book about making money, but there are a lot of things for inspirational in this book. So like it has how many formulas? Yeah, 16 formulas. So 16 formulas. Currently I am reading this and I am on chapter 15. And so this is one of the best book and very reputed book on motivation and inspiration. Next is Dr. Carol Dweck's Mindset. I have not started reading this book, but it's like changing the way you think to fulfill your potential. So I had to see, but I have collected it because one of my friends told me this is a good book. This one is Marshall Goldsmith, and we know who is he. What got you here won't get you there. How successful people become even more successful. It's all about the success. It's all about, like you can see here, the ladder of the success. As I told you, that failure is the ladder of the success. So accept the failure. So here also it is written that way. It is one of the best book. And I have 2 books from Mark Manson. This one, The Subtle Art of Not Giving Up. So what it says that a counterintuitive approach to living a good life. I have not started it again and again. This one,
I have read this book because everything is so a book about hope. जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, इस बुक को आप पढ़ना. ये आपको याद दिलाएगा कि एक आशा की किरण कहीं से तो नजर आ रही है. सो जब आप चारों तरफ से फ्रस्ट्रेट हो जाओ, नेक्स्ट इज इस किताब को, दिस वन. It's a very well-known book, and the men are from Mars and women are from Venus. John Gray. What it shows you is it's a relationship between a man and women, between men and women. So how to understand each other without thinking negative. Building lasting and loving relationship, depend on the moods, how to respond it, all these things. It's a good for married couple, or even if the youngsters who are going with relationship kind of thing. It's a good book, and it's a very, very renowned book. Most of the people, they know it. Coming next, 2 Japanese books, and one is Zen Mind. Very good book. How the Japanese people, they are always happy. It's all about the happiness, and it's also about what kind of food they eat. Like, instead of taking sugar, you can take sugarcane juice. आप गन्ने का जूस पी सकते हैं. आप मत लीजिए आपके जो शक्कर या चीनी मत लीजिए, लेकिन आप गन्ने का जूस ले सकते हैं. उस टाइप का ये सब चीज़ इसमें बताया गया है. So it's all about Zen and the art of happiness. It's a good book. I have completed it. Ikigai. So again, this is also a very good Japanese book, all about a secret of long and happy life. So complementary to one to each other. एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट है ये, और ये सूत्रों के ऊपर आधार है. आप देख सकते हैं ये इस चीज़ को. सो इकिगाई by Hector Garcia and Francis Mireles, Zen by Chris Prentice. So these are 2 Japanese books I have. One of the best book I have got last year is Stillness is the Key by Ryan Holiday. In fact, we have given the gifts to our potential customers from a marketing team, and I didn't know about this book, and one of my customers, very senior vice president labor person, he told me, "Hema, this is a very good book, you should read it." So he has other books also. Obstacle is the Key and Ego is the Enemy. ये जो 2 और बुक हैं, आप ये और 2 बुक खरीद सकते हैं. मैंने Obstacle is the Key का ऑडियो बुक मैंने सुना है. मैंने इसको खरीदा नहीं हूँ अभी तक, but let me go through this, and then I will, because these are the 2 books. Ego is the enemy. Like we always say that, ego hurt होता है. So ego जब hurt होता है, हम बहुत कुछ कर जाते हैं. So उस शत्रु को निकालिए पहले. And this is Ryan Holiday's book. This is a small book from Mr. Rajan. He is a trainer on public speaking, how to make a good public speaking kind of thing. I have attended a seminar for his seminar, and वहाँ पर ये मुझे मिला था. So इसमें उन्होंने लिखा है कि even a common man can be a trainer, and how he has mentioned some of the formulas here. In fact, he conducts a workshop, and you can
get advertisement in the Times of India and other papers also, wherever he conducts workshop in Mumbai and almost all the cities. So इसमें उन्होंने लिखा है कि एक आम आदमी कैसे दूसरों को ट्रेनिंग देने में मदद कर सकता है, कैसे ट्रेनर बन सकता है. सो नॉर्मली कहते हैं कि कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन और या फिर यू नो post graduates or PhD holders or highly educated persons, they can be the only trainer. But वो उसको गलत साबित कर दिया है. एक छोटा सा सेल्समैन भी ट्रेनर बन सकता है. इस टाइप का है वो बुक. कमिंग नेक्स्ट इज गौर गोपाल दास. जैसे मैंने आपसे कहा हूँ कि इनके भाषण मैंने सुना हूँ इस्कॉन में मैं जब जाता हूँ. सो एक जोक वो एक बार बोला था मुझे याद है कि एक लड़का और उसके पिताजी के बात चल रही थी और उसका पिताजी ने उसको बोला कि बेटा तू अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे मैं तुझे एक 2 व्हीलर खरीद के दे दूँगा और अच्छे मार्क्स लाएंगे कॉलेज के बाद मैं तुमको एक 4 व्हीलर खरीद के दे दूँगा. तो उस लड़के ने पूछा कि मैं अगर पापा मैं अच्छा मार्क नहीं ला पाया तो उसके पिताजी ने गुस्से में बोला कि तुझे मैं 3 व्हीलर एक खरीद के दे दूँगा, तो उसी के लायक है. लेकिन वो बहुत ही अच्छे उनके छोटे छोटे वीडियोज़ हैं गौर गोपाल दास के. अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट आप वो छोटे छोटे वीडियोज़ को देख लीजिए. बहुत ही आई मीन लाइफ से अमेजिंग सीक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ. एक कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. जैसे कि गीता में, भगवत गीता में ध्यान योग में 17 श्लोक शायद है, 17 नंबर श्लोक में लिखा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. आप खान पीन आमोद प्रमोद हर चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशनल बुक हाउ टू बैलेंस योर लाइफ. ओके, नेक्स्ट इज ईट दैट फ्रॉग. अजीब सा लगता है ना किताब, अजीब सा लगता है ना, लेकिन मैंने अभी जो थोड़ा बोला ना एक बात कि वो टालम टोल और बहुत बड़े से वर्ड है जो इंग्लिश में जो प्रोक्रास्टिनेशन. सो मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ. आज नहीं करते यार, कल करते हैं. वो कल करते करते ना रह जाता है. तो इसमें कुएं के मेंढक के जैसे रहने से अच्छा आपको मेजर काम को मेजर टाइम दे के करना चाहिए. सो you have to spend major time for the major work. And if you don't spend major time on the major work and you spend time on the minor work, आपके सारे काम रुक जाएंगे. So, Brian Tracy is one of the eminent speaker and motivational speaker worldwide. And I have his other books also. I'll show you. Then, so you can heal your life. Louise Hay. And this book I had given to my wife, and she said every couple, every human being, every ladies, they should read this book. आप हमेशा हम हमेशा शिकायत करते हैं ना कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी बीवी ऐसा है, मेरी सास ऐसा है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरे कज़न ब्रदर्स ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो है, मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरी नौकरी ऐसी है. इसमें लिखा गया है वो चीज़ इसमें लिखा गया है कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं ये सारी चीज़ों से. So this is one of the best motivational book. I'll recommend to buy this and read it. Then Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Extremely good book. Subconscious mind कहते हैं ना, अवचेतन मन.
एक बार आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ बैठ जाता है ना, वो आपके मन से भी बहुत तेज दौड़ता है। दिन रात आप वो सोचते रहते हैं, और दिन रात वो सोचने में ही आपकी जो वाइब्रेशंस होते हैं यहाँ पर ब्रेन में, उसी के पीछे आप लगे रहते हैं, और एक ना एक दिन आप हासिल करके रहते हैं। सो एक होता है माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, मन और अवचेतन मन जो होता है। अवचेतन मन में एक बार, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। आई लव बाइक्स, और मेरे बाइक के ब्लॉग भी आने वाले हैं, आप देख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ ये लॉकडाउन के बाद। सो मैं बाइक बहुत तेज चलाने का मुझे शौक है। लेकिन मैं जब 4 व्हील ड्राइविंग सीख रहा था, वो सीखने का टाइम में वो 20 के आगे बढ़ाते नहीं है। वो दे डोंट अलाउ यू टू ड्यूरिंग योर लर्निंग फेज, दे डोंट अलाउ यू टू गो मोर देन 20 किलोमीटर स्पीड। तो आधा घंटा वो सीखने के बाद जब मैं वो ड्राइविंग स्कूल के वहाँ से इंस्ट्रक्टर को बाय करके आता था, मेरा जो स्पीड बाइक की है वो अपने आप 20 में हो जाता था। और ये मुझे जब पता चला, मैं बोला क्या है यार ये, तो मेरा बेटा एक बार बोला कि आपको यहाँ से आने में इतनी देर कैसे लग गई। मैं बोला नहीं, पता नहीं, मैं तो आ ही रहा था। बट बाद में मैं 1 महीने का जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि वो जो 20 किलोमीटर स्पीड में वो गाड़ी चलाता था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता था, तो मैं ज़्यादा एक्सीलरेटर को घुमा नहीं पाता और गियर नहीं डाल पाता। दैट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार आप दिमाग में बिठा लिया, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इसी गर्लफ्रेंड को पटाना है, जो भी करना है आप, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छा एक घर खरीदना है, एक बार ठान लेते हैं ना आदमी, इस सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। और फिर विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करता है। सो ये एक दूसरे को हेल्प करता है सब कुछ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड देन जैसे मैंने अवचेतन मन की बात की, आई एम द माइंड। हाँ, इसको मैंने पढ़ा है, द मास्टर की टू अचीव एनीथिंग यू वांट। दीप त्रिवेदी वो कहते हैं, आई एम द माइंड, वंस आई एम सेट, ऑल सेट, नो फेल्यूर, नो प्रोक्रास्टिनेशन। और वो सच है, एक बार आप मन में ठान लिया किसी चीज़ करने के लिए। इनका भी और भी अच्छे बुक्स हैं दीप त्रिवेदी के, मैं उनके ब्लॉग्स भी पढ़ता रहता हूँ। सो दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड बुक। वो कहते हैं ना, मन और विवेक में हमेशा एक होता है टकराव। मन कहता है कि मैं ये करूँगा, बट विवेक बोलता है अरे नहीं यार, वो करेगा तो तुझे ये होगा, वो होगा। मन कहता है कि मुझे मर्सिडीज़ खरीदूँ, बट विवेक कहता है कि तेरे पास तो पैसा नहीं है, तू मर्सिडीज़ खरीद नहीं सकता है, तू ये खरीद सकता है। बट इनकी जो कहानी है कि ये जो कहते हैं, एक बार मन में ठान लिया तो मन अगर सेट हो गया, जैसे वो कहते हैं, वंस आई एम सेट, ऑल सेट, नो फ्रस्ट्रेशंस, नो प्रोक्रास्टिनेशंस, नो फेल्योर, कुछ नहीं होता है। So please try to read, even if he has blogs also. Mr. Deep Trivedi. I have 2 more books to. This is a long video, but what can I do? I have so many books, and I have to say at least 1 or 2 lines on each and every book. And let me tell you very frankly, this is the first book. I know. Sorry. This is not the first book. I think this is the second book I have bought. आप देख सकते हैं पुराना हो गया है। Promote yourself. इसमें वो सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज लिखा गया है, अपने आप को कैसे आप खुद प्रमोट कर सकते हो। कुछ होता है ना, जैसे कि फिल्म स्टार्स हैं, वो फिल्म स्टार्स अपने आप को कैसे प्रमोट करते हैं, वो चीज़। सो द न्यू रूल्स फॉर बिल्डिंग एन आउटस्टैंडिंग करियर। आप किसी भी चीज़ में करियर बनाइए, किसी भी प्रोफेशन में करियर बनाइए, whether you do a business or not, anything. So you need to promote yourself. You need to.
Nobody is going to promote you. Nobody is going to, they can help you. Your friends, they can help you. Your seniors, they can help you. But you need to work on your own and how to promote yourself to that position. That's a good book. Extremely good book. And finally, this one. This book, I think it took me more than 3 months to complete. The 48 Laws of Power. वो तो कहते हैं ना, जो एक मूवी में शायद शाहरुख खान की कोई मूवी में, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ बिकम अ मैन. सो रॉबर्ट ग्रीन एंड जस्ट एल्फर्स, ये बुक मैंने एक्चुअली एक सेकेंड हैंड बुक है. इसको मैंने यहाँ से ख़रीदा था. वो जो हमारे मुंबई में फाउंटेन है, वो फाउंटेन के वहाँ पर मैं ऐसे एक दिन घूमते घूमते कहीं पर, तो एक कस्टमर, आई थिंक आई हैड गॉन फॉर अ मीटिंग एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, सो मैं एक राउंड मारा था बुक स्टॉल में. ये बुक मुझे मिली. ये मुझे आधे दाम में मिली, बट ट्रेमेंडस थी. वेरी गुड थिंग्स आर रिटन दिस. सो 48 लॉज ऑफ पावर, 48 जो रूल और लॉ लिखा गया है, आप उसको इवन 5 to 6% अगर आप उस लॉज को अप्लाई करते हैं, you can be a powerful person. That's what about this 48 laws of power. So, friends, let me tell you very frankly, I have collected these books, and just like one day I had made a video and I had told you that how you can read 3 to 4 books at a time and in a day. So one is a spiritual book. It has different content, so you can read it in the morning. And motivational books, so anytime you can read. And even the spiritual books you can read before going to the bed. Motivational books you can read at any time, whenever you find time, traveling, at the time of traveling, or at the time of alone at home, anytime. And any economics books or management strategy books, finance books, you can read. So all these 3 books are different contents. Now the thing is, जैसे मैंने कहा था कि चाणक्य नीति में लिखा गया है कि हर दिन एक किताब के एक पन्ना, आधा पन्ना, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस, एक वर्ड हर दिन आपको पढ़ना है. वो ज़रूरी है. सो चाणक्य नीति में अगर लिखा गया है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि उसी को तो हम हमारे भारतवर्ष में हम लोग उसी को मान के चलते हैं. And if you cannot, buy these books, or you don't have time to read, which is wrong. समय निकालना पड़ता है. और एक तो ऐसा भी नहीं, एक पन्ना भी आप नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, बट एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो वो बहुत कुछ याद रहेगा उस पर. अगर ये आप नहीं भी कर सकते हो, सो जैसे मैंने आपको बोला था, मॉर्निंग में उठ के आप रनिंग करते हैं. सो रनिंग के दौरान आप इसके ऑडियो बुक्स, काफ़ी बुक्स के ऑडियो बुक्स होते हैं. और ऑडियो बुक्स अगर आप इंग्लिश में समझना नहीं चाहते हैं, तो इंग्लिश में आदि गुरुदास करके एक हैं जो इसके एनालिसिस करते हैं बुक्स के. सो उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो में. आप रनिंग के दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान आधा घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आधा घंटे में एक ऑडियो बुक आप ख़त्म कर सकते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू, इनफैक्ट आप एक बार सुन लेंगे तो आपका दिल कहेगा कि किताब को खरीद के पढ़ूं. अब पढ़ने से आपकी स्पीकिंग पावर होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग पावर होगा,
फील गुड फैक्टर जो होता है, फील गुड फैक्टर भी आएगा. I think this is a very long video, but again, maybe on other books, I also take that much of time because at least जो किताबें हैं मेरे पास उसके ऊपर एक एक मिनट तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है. So please wait for my next video on strategic management, on finance and economics, and on environmental science. I have extremely good books. Some of the books I have collected, I have not just yet read, but वो किताबों का जब ढेर आप देखते हैं, सो आपको हमेशा दिल कहता है कि मैं आज पढ़ूँ. कुछ होगा नहीं तो फिर आप बैठ जाएंगे कुछ और करने के लिए, बट सामने कुछ होगा. जैसे न्यूज़पेपर होता तो कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर उठाते हम पढ़ने के लिए, ऐसे ही किताब सामने होगा तो पढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Wait for my next video.